Ji, Assalamu alaikum and a very warm welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you for joining today's session of Noor International University ka fireside chat sessions. हमें आज join कर रहे हैं as our guest for today, Miss Naurin Zaki. Naurin, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum ji, how are you? Very well, thank you. Thank you for joining us and for taking the opportunity and allowing us to talk with you today. In typical fashion, Naurin, we quickly go over to the admin team. वो एक brief promo run करते हैं of Noor International University and some of the programs it's running. उसके बाद आके हम आपका formal तारुफ करवाएंगे. So over to the admin team for taking this forward. Great, thank you very much, admin team. So welcome back, audience. मैं एक मुख्तसर सा तारुफ करवा देता हूँ मिस नौरीन ज़की का, जो आज हमारी गेस्ट हैं. Naurin Ahmad Zaki is professionally trained in journalism, educational leadership and management, as well as German language education. She has accumulated over 20 years of experience in the fields of print journalism, German language instruction, and the Pakistan-Germany cross-culture collaboration. She's been born in Germany and brought up in Germany, and thereafter pursuing graduate and postgraduate studies in her parents' native country of Pakistan. She realized very early on in her career that she was uniquely qualified to pursue educational and cultural ambassadorship for German language and culture in Pakistan, and vice versa. Her initial association with the Goethe Institute Pakistan almost 20 years ago subsequently led her to establish the Annemarie-Schimmel-Haus in Lahore in 2003. This institution has played a vital role in furthering the Pak-German cultural dialogue, in addition to teaching German as a foreign language to thousands of Pakistani students, many of whom have gone on to pursue graduate
postgraduate, and doctoral studies in Germany. With that introduction, Naurin, thank you very much again for joining us and for sharing your profile and your time today. मैं सबसे पहले तो I think पहला सवाल यही करूँगा कि माशाल्लाह with such a diverse profile, fill us with the gaps we may have missed, and then we'll move on to our key area for today, which actually is higher education opportunities in Germany, but like you said, we'll also be discussing some professional opportunities which may be relevant हमारे audience के लिए जो आज हमें join कर रहे हैं. So over to you. Thank you so much for having me. It's a great honor. और आपने सब कुछ बोल भी दिया, बहुत अच्छी तरह बोला. But मैं पैदा हुई जर्मनी में एक बहुत छोटे शहर में जिधर खाली जर्मन्स थे, and we were the only Pakistani family, so we were kind of famous over there. हमारी बार जब भी मैं my first day in school, I was a huge picture of me in the newspaper. So I grew up in a very German sort of cultural and setting. So that obviously my parents being from Pakistan, they were very well adjusted over there, but they also wanted their children to learn a little bit about their native culture, because as a child, I didn't see myself as a Pakistani, to be very honest, because I was surrounded by Germans. तो फिर मैं यहाँ आई, मैंने कनेड में अपना BA किया. थोड़ी सी adjustment problems तो होती हैं, but I soon realized that I really liked it over here, because not everybody would ask me, अच्छा तुम्हारे काले बाल हैं, तुम कहाँ से आई हो? Oh my God, this was always difficult as a child. So I went to Canada, then I did my master's over here, and then I started working as a journalist. And I used to visit the Goethe Institute because I miss Germany, obviously, and German language. That is my first language. तो एक फिर opportunity निकली, उनको एक director चाहिए था और पहले teachers चाहिए थे, तो मैं journalists बहुत कम कमाते थे उस ज़माने में. तो हम लोग फिर मैं जाती थी थोड़ा सा शाम को German पढ़ाने to have a little more money in my pockets. And later on, then I took over the Goethe Institute as the resident director. Unfortunately, the German government closed many Goethe institutes in the 90s, and one of them in one particular year was the Lahore Institute. So वो अब Gen 1 बन गया, but पहले बहुत ही खूबसूरत हमारा एक institute होता था, बहुत हल्ला गुल्ला, especially during the martial law years. There was a lot of, the Ajoka theater would perform there regularly. So it was a safe place for people who wanted to have a different opinion. And I just loved doing it. But unfortunately, when we were closed, I went back to Germany for a few years. Then I got the opportunity to open the Annemarie-Schimmel-Haus, which is it's not a Goethe Institute, but it's called a Goethe Center. And we are cooperation partners of the Goethe Institute, which is still in Karachi. It's been there since many, many years, over 70 years. तो बस तो वहाँ मैं तब से ही यहाँ ही काम करती हूँ, और मेरे ख्याल से यहाँ से ही मैं रिटायर होंगी. I don't want to do anything else. So yes, that's Good. Well, thank you for sharing. I think it's always good to see the personal side of the person we're talking to and their experiences that they've gone through. और मुझे again it discloses my age, but मुझे अच्छी तरह याद है जो बिल्कुल जो आपने कहा. मैं गुलबर्ग में रहता हूँ, so Chen 1 वाली जो एरिया है, मैं multiple times I've been to the Goethe Institute. Cultural events होते थे, and बाकी वो theater वाला was a very big one. And if I recall, I may be mistaken, I think Canada और उनका कुछ आपस में शायद linkage भी था. A lot of Canada-oriented dramatic society people used to participate in a lot of drama, but again, that may just have been coincidence in the events that I went to. But Waki, I think it was a cultural center which was very active in that area. So before we move on to आज के हमारे टॉपिक पे, Annemarie-Schimmel-Haus के बारे में थोड़ा सा briefly बताइए कि what all does it encompass today, so that क्योंकि I think उसकी relevance भी हमारे आज audience के लिए हो सकती है in terms of taking up opportunities, not only culturally but from a language perspective. मैं अपने सारे students को कहूँगा, even at this age, at a young age for sure, even at this age, एक नई लैंग्वेज सीखना आपके जहन में, आपके ब्रेन में एक साइनेप्सिस कॉज करती है. इट रियली ओपन्स अप एंड क्रिएट्स न्यू ब्लड सेल्स which can be very very useful for both your academic as well as your professional career. उसके बारे में बताइए थोड़ा सा प्लीज. Annemarie-Schimmel, I'm sure you, because हमारी generation ऐसी
Professor Dr. Annemarie-Schimmel was an amazing scholar. She loved Lahore. She was very welcomed in Lahore. The Canal Road is named after her, and we named our institute after her because unfortunately she passed away in the year when we opened in 2002. तो हमने उनके नाम in honor of her, but हमारा basic जो मकसद है is to promote German culture and German language. तो उसके लिए हम एक तो regularly cultural events organize करते हैं for everyone. Our doors are open for everyone who's interested. हम theatre shows दिखाते हैं, हम German music, fusion music, concerts organize करते हैं, seminars होते हैं, art exhibitions होती हैं, film shows होती हैं. ये एक हमारा मकसद है to engage in a cultural dialogue with Pakistan. So, or with the host country, जिधर भी हमारे Goethe centers or Goethe institutes होते हैं, that's what we do. And on the other hand, we would like to give people an opportunity to learn German. German is a language that is spoken in many countries, and many people, even if they don't speak it as a native speaker, there are over 100 million people who speak German in the whole world. तो एक मुझे लगता है लैंग्वेज के थ्रू आपकी आंखें खुलती हैं, एक नई दुनिया आपके सामने खुल जाती है. तो अगर आपको इसका शौक है तो we are the right place. Anybody can come and join us. It's free of cost. We never take money for any of our events. और लैंग्वेज हम इसलिए सिखाते हैं कि लोग या तो एज अ हॉबी या फॉर जॉब और स्टडी अपॉर्चुनिटीज जर्मन में सीखें. तो हम लोग वे हाउस टुगेदर विद द अलियांस फ्रांसेज, व्हिच इज द फ्रेंच कल्चरल सेंटर. हम एक ही बिल्डिंग शेयर करते हैं, तो वो एक यूरोपियन फील भी हमारे इंस्टीट्यूट में है. और people who come here generally like coming and spending time over here, so everybody is invited. Fantastic. Thank you again for sharing. And again, for the benefit of our audience, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक relationship carve out करें. Naurin visited us at the NIU campus recently, thanks to our comms director, Maliha. We're trying to forge a special relationship for you to potentially learn language on campus, as well as try and bring students over to the Annemarie-Schimmel Center, and hopefully also benefit from the broader cultural context जो Naurin हमें आज brief कर लिए. So thank you, Naurin, for sharing that information. Let's move on, Naurin, a little bit focused towards our topic for today, जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे, which is both, let's say, higher education opportunities जो कि Germany में होती हैं, as well as professional opportunities which may be there. I know personally quite a few people, and again कुछ recent past में जो कि Germany गए हैं. Again, Germany का माशाल्लाह, I'm an engineer, so मेरा एक special love है of course for engineers. तो engineering orientation तो बहुत ज़्यादा है, I know, but perhaps आप थोड़ा सा general flavor बता दीजिए about what your thoughts are on education side as well as the professional side, and perhaps obviously जो सबके जहन में एक सवाल होगा, how does the language barrier potentially play into this? जब अगर कोई consider कर रहा होगा to go to the technical part, the theoretical part of the education may be possible. What about the language barrier? You're right. Germany is, I mean, I can tell you one person who went to study in the Heidelberg University, and everybody in Pakistan knows him. That's Allama Iqbal. He went to the Heidelberg University, and I think that is why also Annemarie-Schimmel, she was very close to him. तो एक दोस्ती और एक पढ़ाई का भी रिश्ता है इन दोनों मुल्कों में. तो the language barrier was there for the longest time, because sari padhai, higher and I mean any level, was in German. But like around 20 years ago, the German government decided that they would, because obviously the globalization, everybody has to sort of do something to be part of globalization. So what Germany did is they changed their own degrees into international degrees. So suddenly you didn't get a German degree, but you got a bachelor, master, MPhil, PhD degree, और वो फिर हर एक को पता क्या चीज़ है. And second step में जो बहुत ही important है और जो बहुत अच्छी बात है हमारे students के लिए भी, that they introduced many degree programs in English as the medium of language. So मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त हमारी कोई 2200 से ऊपर international degree programs English में चल रहे हैं. बैचलर लेवल पे भी, बट डेफिनेटली मास्टर और पीएचडी लेवल पे बहुत ज्यादा है, और हर यूनिवर्सिटी ऑफर करती है.
तो ये एक और स्पेशली एशिया से, चाइना से, इंडिया से, पाकिस्तान से लोग बहुत ज्यादा जाना शुरू हो गए हैं इन द पास्ट फ्यू इयर्स एज एन ऑल्टरनेटिव टू गोइंग टू अमेरिका और इंग्लैंड और द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड. सो फिर थोड़ी सी तो जर्मन आपको, you need to know German, क्योंकि वहाँ every German speaks German, and when you come to their country to live there or study there, they expect you to know. They will not speak English with you, but you have to learn German. तो थोड़ी सी सारे ही सीखते हैं. अगर आपने इंग्लिश में परस्यू करनी है तो बिगिनर्स लेवल इज इनफ, और फिर आप जाते हैं, आप सीख ही जाते हैं लोगों के साथ बात कर करके. If you want to study pursue a degree in with German as a medium of language, तो फिर आपको ज़्यादा पढ़नी पड़ती है, but वो भी हम लोग सब कुछ ऑफर करते हैं यहाँ इंस्टीट्यूट में. तो this is a great opportunity for students. साथ में after you've studied, you get an opportunity to stay in Germany and find work. So they extend your visa or your permit, and for a few months you can stay there, look for a job. If you find a job, फिर आपकी वो जो student visa होता है, that's converted into a work visa or a work permit. And so that's why a lot of है तो brain drain, हमारे जो सारे अच्छे bright बच्चे होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, but एक opportunity भी तो है. It's I'm sure most of you know that Germany is one of the biggest economies in the world. It's the richest country in Europe, and it's the fourth largest economy worldwide. And it's not only that. Germans are very proud of their culture, of their, they have a very rich and old heritage, music. Think of Beethoven or Mozart, German speaking. Then you have people like Goethe, Schiller, very famous writers. Or Albert Einstein is a German-speaking man. So, they have a lot to offer, lots and lots of Nobel Prizes and, all these things. बहुत opportunities हैं. फिर आप देखिए economy में क्या है. You have a lot of, when you think of cars, which cars do you think of? Always German Mercedes, cars. Mercedes, BMW, the Mercedes, you name them. Porsche, Volkswagen, German. Opel, Audi, सारी German गाड़ियां हैं. तो they're very proud of their cars. इतनी उनकी सफाई होती है वहाँ, I can't tell you. That is one field, but also machines, engineering, telecommunication. These are all areas where Germans have really excelled and are world leaders. तो बहुत ज़्यादा opportunities हैं for people जो यहाँ से technical degrees के साथ जाते हैं. Engineers, अगर आप फर्ज करें यहाँ से बैचलर करते हैं इंजीनियरिंग के लिए, तो हाथों हाथ आपको वो ले लेते हैं, मास्टर्स करते हैं, and then you get, mostly people just stay there and get fantastic job offers. So these are opportunities which our students can also avail if they are hardworking and willing. So, the sky is really the limit. Fantastic. Good to hear, जी. And good to hear जो कि I think एक बहुत important part आपने कहा कि पढ़ने के बाद the opportunities जो कि professional realm में उनको available होती हैं students who graduate. I think Germany, again मेरी limited understanding के मुताबिक Germany के अंदर जो apprenticeship वाला concept है, that really plays into education, because they're thought, I think, and has been for since I've been growing up, and what I understand of the system is कि जो आपकी professional education है cannot be completed without having that apprenticeship. So it's almost like a segue, a natural, let's say, transition from your academic career to your professional career. And मैं definitely encourage करूँगा to our students to जिसको कहते हैं ना एक immersion program. So Germany truly is a cultural immersion opportunity. उसको ज़रूर देखिए. Language study करने से ही आपको बहुत कुछ आएगा. So do take the opportunity to start learning another language. It's never too late. I learned French at the age of 26. I started learning at the age of 26, and in a couple of years, and alhamdulillah, not to say by any stretch of the imagination I'm very fluent, but I can get by. Or and like the Germans, the French of course are very proud of the language के लिए. So अगर आप opportunities को explore करना चाह रहे हैं, this would be a very good first step to understand the language and learn the language. Thank you, Naurin. Naurin, let's transition a little bit briefly into
what could be professions and courses which are in demand in Germany which could be relevant for our student body? हमने इंटरव्यू शुरू होने से पहले कुछ थोड़ी सी मुख्तसर सी बात की थी. Of course हमारा जो primary domain है, it's health oriented disciplines, but again we have psychology, we have economics, we have a wide base. All of them may not be relevant, but anything that comes and is top of mind in terms of your feedback, what you've seen, जो पाकिस्तानी oriented students हैं, वहाँ जाके क्या बेहतर किस चीज में plug in कर सकते हैं? इस वक्त बहुत ज़्यादा opportunities है, क्योंकि जर्मनी की जो population है वो बहुत बूढ़ी population है. That is one reason is the excellent healthcare system. So people live longer, but on the other hand also उनकी birth rate बहुत कम है. तो इसका मतलब ये है कि workforce की बहुत ज़रूरत है उनके. अब healthcare की जो आप बात कर रहे हैं, फिलहाल उनको एक estimation है कि in the next 2-3 years they will be needing 150,000 people in the healthcare sector. उसका मतलब खाली nurses नहीं है, उसमें physiotherapists भी हैं, उसमें जो elderly के लिए old people homes में जो काम करते हैं वो लोग हैं. So anybody related to the healthcare system is needed, medical, technicians, radiology के अंदर. तो बहुत ज़्यादा opportunities हैं और उसके लिए एक special visa भी दिया जा रहा है. तो अगर आप उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, आप थोड़ा सा गूगल करेंगे, आप जर्मन एम्बेसी की जो इस्लामाबाद में वेबसाइट पे देखेंगे तो बहुत उसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन है. आप हमारे पास भी आ सकते हैं, हम भी आपको गाइड कर सकते हैं. तो दिस इज राइट नाउ बिकॉज अभी हमने 2-3 कोर्सेज करवाए हैं स्पेशली फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. अब तो जर्मनी में द लैंग्वेज कोर्स बुक्स, they are special books for healthcare people. उसमें फिर हम भी अपने classes में उनको ज़्यादातर जो vocabulary है वो use, instead of for example जब class होती है कि एक कमरे के अंदर क्या होता है, एक सोफा है, एक टीवी है, तो हम इन classes में एक मरीजों का कमरा दिखाते हैं और उसमें हम फिर सिखाते हैं vocabulary में कि वहाँ बिस्तर है, वहाँ वो blood pressure machine है और ये सारी चीजें हैं. So we try to sort of help them. And यहाँ से थोड़ी सी पढ़ाई करके जर्मन की फिर यहाँ एजेंट्स होते हैं and it's not a scam. It is really, I mean I'm sure there are also scams, one has to be careful, but people are recruited from Pakistan and taken to Germany और वहाँ फिर वो हॉस्पिटल में जो एजेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट ने एजेंट्स को they've asked them to identify people from all over the world. तो वो गवर्नमेंट इसको encourage करती है और उनको फिर हॉस्पिटल्स में या हेल्थ केयर में प्लेस करते हैं और अच्छी तनख्वाहें भी मिलते हैं. बाद में बच्चे या स्पाउस भी आ सकता है. सो ये एक फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है एंड दिस अपॉर्चुनिटी इज नॉट ओनली फॉर द हेल्थ केयर सेक्टर बट एट द मोमेंट देयर इज अ acute shortage in the engineering professions. For example, mechanical engineering, automotive, electrical engineering, software engineers, STEM related fields के अंदर बहुत कमी है. So ये एक है. और जो आप अभी वो जो आप apprenticeship की बात कर रहे थे, those Germany has an excellent vocational training program. So they are not everybody goes to university. इधर भी नहीं उधर भी नहीं. But फर्क ये है कि वहाँ जब लोग यूनिवर्सिटी नहीं जाते हैं और सीख के प्लम्बर बनते हैं, कारपेंटर बनते हैं, टूल मेकर्स बनते हैं, तो वो बहुत फख्र अपने प्रोफेशन के साथ वो महसूस करते हैं. ऐसा नहीं है कि वो समझते हैं कि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि वो भी वोकेशनल ट्रेनिंग उनकी बहुत एक अच्छी होती है. साइड बाय साइड क्लास 10 के बाद आप सीखते हैं अपने प्रोफेशन में हर रोज जाके, और फिर शाम को आप क्लासेस भी अटेंड करते हैं कि आपकी जो दूसरी जो फॉर्मल पढ़ाई एक है वो भी मुकम्मल हो. So this two-way vocational training was also introduced by the German government in collaboration with the Pakistani government many years ago in Pakistan. And if you look at TEFTA या इस तरह की जो vocational training है, this was all set up. A lot of it was set up by the German government. और अभी भी वो successfully चल रहे होते हैं. And I personally feel when I have a plumber in my home or in the office जिसने एक डिप्लोमा लिया होता है, उसका काम और ही लेवल का होता है, सफाई का होता है, प्रोफेशनल होता है. तो ये हमें मेरे ख्याल से बहुत इंकरेज करना चाहिए. और इसकी अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा हैं जर्मनी कि अगर लोग इन प्रोफेशंस की जाना चाहते हैं तो वो भी जर्मन गवर्नमेंट उसके लिए बहुत फैसिलिटेट करी है.
So Very yes, cool. these would be, yeah. बिल्कुल, I think मैं आपके point से I've just quickly taken some notes, and I think some interesting points which I can quickly dilate upon for the benefit of our audience. जो पहली आपने बात की, in fact last बात की vocational skills वाली, I think जो again because the way that the German model is set up, हमारे जहन में typically वो arena open up नहीं करता polytechnics का. But just for the benefit of the students, हमारी at the strategic level in the university, हम अब बड़े actively देख रहे हैं कि जो associate's degree program है, जो 2 साल का program है, we haven't phased that into the university just yet. लेकिन इंशाल्लाह very soon हम उसकी तरफ भी जाएंगे, which will create opportunities जो कि वो लोग हैं who do not want to spend 4 years of their lives away, let's say from the job market. It is expensive. उनके लिए एक opportunity हम create करेंगे, and again those are plug-in opportunities. अगर किसी को opportunity मिलती है इस तरह की to go see that in Germany, that could be fantastic and something that we could help facilitate. Secondly, again for the benefit of the students, जैसा नौरीन ने कहा कि जी the healthcare side, I again have personally witnessed again Germany has इतना उनका strong healthcare system है. मैंने खुद देखा है कि मिडल ईस्टर्न क्लाइंटल बहुत आता है. एक तो डायस्पोरा भी बहुत है in the bigger cities of Frankfurt, Munich. मैं बड़ा सरप्राइज हुआ when I saw a lot of women in hijab, for example. तो मैंने थोड़ा सा पूछा तो उन्होंने कहा कि जी they are healthcare tourists जो कि आए हुए हैं for treatment in Germany because the system is well recognized. और उस वजह से मैंने उस वक्त थोड़ी सी I remember तभी बात की थी and अस्पताल के अमले ने मुझे कहा था कि जी there is a big niche for Muslim healthcare oriented workers because इनकी request होती है अक्सर कि जी कोई मुसलमान staff है who could treat us. Again, it's a cultural let's say element which comes into play. लेकिन मैं कहूँगा कि again a niche opportunity जो कि हमारे students भी from across the system इससे benefit कर सकते हैं. Lastly, नौरीन ने कहा कि जी these healthcare institutions have export promoter let's say promoters जो कि बाहर से स्टाफ लेके आ सकते हैं इनके लिए. हमारे सिस्टम में अभी about 6-7 weeks ago our system got the opportunity to add on a manpower export company माहिरीन के नाम से into the fold of our system. It is also by some of our sponsors. So अगर किसी student ने discuss करना चाहेंगे the opportunities for Germany in particular or across the board, we'll be happy to support them for their professional needs. Of course brain drain है. We always have the expectation कि जी वहाँ से जाके आप सीख के again you'll come back and hopefully be able to give back to society. Naurin, let's switch back a little bit on the language side. ये बताइए कि at the very base level, and I think hopefully आप इस पे थोड़ी सी light shed कर सकती हैं. I found it very interesting कि आपने contextual language की कुछ बात की कि जी those programs जो आप specially for example चलाती हैं कि अगर healthcare orientation है तो उनकी सारी चीजें are a little bit tailored towards the profession that they may be going into. Stepping, let's say, a little bit more at the macro view, अगर कोई student engage करना चाहे in an opportunity of language, what sort of timeline would they be looking at to get a basic level going? And if I can put you on the spot and ask you, what sort of cost would they be looking at to get their feet wet? Because I guess that would be the first part of understanding, how they can start their professional or academic career in Germany. हम लोग यहाँ ऑफर हमेशा करते थे ऑन कैंपस क्लासेस. अब आजकल कोई वापस ही नहीं आना चाह रहा है. We have switched to the online mode because of COVID. We were closed. We are an education institution. तो हम लोग सारे, I'm guessing आप लोग भी बंद रहे होंगे. तो बहुत हमारे टीचर्स को हमने गोएटे इंस्टीट्यूट में जर्मनी बहुत ट्रेन किया. So actually our online classes are also very I think they're very successful and they're full. अब हमारा ये है यूरोपियन सारी लैंग्वेजेस, यूरोप ने जो EU है उन्होंने सारी लैंग्वेजेस जो अपनी है, बी इट फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, जर्मन, जो भी सारी लैंग्वेजेस है उनको एक ही सिस्टम में उसको डिवाइड किया हुआ है. सो दैट व्हेन आई से कि मैंने B1 किया हुआ जर्मन में, तो कोई स्पेन में जो होगा उसको ये पता होगा कि B1
का स्टूडेंट उसको कितनी जर्मन आती है, क्योंकि उसको इतनी ही, फिर अगर B1 उसने स्पेनिश में की हुई होगी तो इतनी ही आएगी। तो हम लोगों के ये यूरोपियन फ्रेमवर्क में 6 लेवल्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम A1 एंड एंडिंग एट C2. So A1, A2, B1, that's the beginner's level, फिर B1, B2 is the middle level sort of thing, और C1 और जब आप C2 कर लेते हो तो आपको वही vocabulary, वही knowledge होती है जो एक नेटिव स्पीकर को होता है, तो आप फर जर्मन बोलते हैं। अब जो the courses which are offered in English, उसके लिए आपको खाली A1 करना चाहिए होता है, और वो यूनिवर्सिटी की भी डिमांड नहीं होती है, वो एम्बेसी कहती है कि जैसे मैंने पहले कहा है, इफ यू लिव इन जर्मनी यू नीड टू नो इतनी जर्मन के आप कम से कम ये तो पूछ सकें कि भाई मुझे नहीं पता मैंने किधर जाना है, यहाँ से स्टेशन का क्या रास्ता है, कि आप इतनी सी बेसिक एक जर्मन में चीज कह सको, सो दैट पीपल कैन आंसर यू, or you're going to buy bread, or you're going, you getting into a bus so that you can speak, because not everybody in Germany speaks English or even wants to speak English. As I said, they're very proud of the culture and their language. तो वो A1 का जो कोर्स है वो आपका 10 हफ्तों के अंदर खत्म हो जाता है, बिकॉज हम लोग खाली इंटेंसिव क्लासेस फिलहाल ऑफर करते हैं, क्योंकि एवरीबडी हु लर्न्स जर्मन इन आवर इंस्टीट्यूट वांट्स टू गो टू जर्मनी एंड दे ऑल इन अ हरी। तो फिर हम वो जो पहले जमाने में गोएट इंस्टीट्यूट में 1 दफा 2 दफा 3 दफा हफ्ते में था, वो हम नहीं करते। वी टीच 5 times a week for 2.5 hours every day, and in that way you are done in 10 weeks with the A1, another 10 weeks A2, फिर B1 B2 क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है वो हम 12 हफ्तों में खत्म करते हैं, और फिर C1 C2 जो है वो तकरीबन 16 हफ्ते लग जाते हैं। So we're looking at around 1.5 years if you decide to enroll in a degree course in Germany which is in German. English के लिए, as I said, you're done in 10 weeks. You apply for you go to the university, you apply at the through email or the internet, you fill out their form, you apply, जब आपकी आ जाती है enrollment तो फिर आप वीजे के लिए अप्लाई करते हो और फिर आप जर्मनी चले जाते हो। एक चीज जो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पता नहीं कैसे भूल गई हूँ, but the most attractive thing in my opinion is that Germany is a social welfare state. So in Germany everybody believes that education should be accessible to everyone. ये नहीं हो सकता कि खाली अमीर लोग यूनिवर्सिटी जाएं क्योंकि उनके पास पैसा है। इसलिए for Germans and for international students all education is free of cost. And I think that is fantastic because है बहुत अच्छी पढ़ाई। मुझे पता है पाकिस्तान में हम लोग थोड़ा सा we believe in good things have to be expensive. ये हमारी सोच है और ये निकलना भी नहीं है, but I can assure you आप रैंकिंग में देख लें, even the best universities in Germany are free of cost. थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव एक फी होती है, that's something like 200 euros, which is something like 30,000-40,000 rupees for 6 months. इतना तो सस्ता कोई स्कूल भी नहीं अब होता पाकिस्तान में। So we are looking at world-class education, opportunities to work afterwards at a very low price. So ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से selling point है। तो ये बड़ी बात है, मगर सब कुछ इंग्लिश में नहीं पढ़ाया जाता। There are certain degrees, for example, medicine or law, which are only taught in German so far. Maybe that changes, but for now, and our classes are full of doctors. उन्होंने यहाँ से MBBS किया होता है, और उसके बाद they are looking at Germany where they can do their specialization. तो वो फिर C1 या C2 करके जाते हैं, और वो उसी क्लास में बैठते हैं जिधर हमारी नर्सेस भी अक्सर बैठती हैं। हमारी रूरल एरिया से बहुत औरतें आती हैं क्योंकि उनके मियाँ जर्मनी में काम करते हैं। देयर इज अ फैमिली रीयूनियन वीजा, जिसके साथ अगर आप जर्मनी में बहुत सालों से रहते हैं, then you can also call your family over. But to make it easier for people in Pakistan or else from elsewhere, they have to learn a little bit of German. क्योंकि यहाँ अक्सर औरतें फिर I know a lot of people in Germany जिनको एक लफ्ज जर्मन का नहीं आता, वो 20 सालों से वहाँ बैठे हुए हैं। तो in order to integrate them in a better way, they say कि आप थोड़ी सी जर्मन सीख के आएंगे, आपके लिए ही इसका बहुत बड़ा फायदा है। तो yes, this is the opportunities that one has, and we offer these classes. We are not very expensive, I would feel, but obviously everything comes with a price. तो हम तकरीबन
आजकल हम एक स्पेशल ऑफर भी चला रहे हैं कि अगले महीने से अगर आप यहाँ आए और सीखें तो इट्स अराउंड 23,000 रुपीज फॉर द फुल A1 कोर्स, जिसके अंदर आप 140 आवर्स आपके टीचिंग के होंगे. सो एंड वी कैप our classes at 20. तो फिर बड़ी भी क्लासेस नहीं होती है. इवन द ऑनलाइन क्लासेस में बस 20 बच्चे होते हैं, तो हर एक को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है बोलने का, समझने का, लिसनिंग, writing, reading. All these skills are taught in our classes by trained teachers. Thank you for sharing. And again, sorry to put you on the spot कि हमने आपसे सवाल किया, लेकिन of course आपने, क्योंकि पहले वाला भी यही और बहुत pertinently आपने कहा कि again मेरे जानने वाले भी जो कुछ गए हैं to Germany, the educational fees are negligible. And so that's a huge benefit for those who are wishing to pursue, and of course the opportunities जो professionally आपके पास open up होती हैं. Naurin, we have a viewer question. Shahir ने पूछा है कि जी, other than medicine and engineering, which of course stand out currently, would you be able to give a flavor of what else is available that our students may be interested in, broadly speaking, in Germany? अगर आप आर्ट स्टूडेंट हैं, आप आर्किटेक्चर स्टूडेंट हैं, आई डोंट नो, मगर द बाउहाउस मूवमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मूवमेंट्स इन आर्किटेक्चर. द बाउहाउस यूनिवर्सिटी स्टिल एग्जिस्ट्स इन अ प्लेस कॉल्ड वाइमा. एंड मुझे पता है जैसे हमारे यहाँ आर्ट कॉलेजेस से बहुत स्टूडेंट आते हैं, बिकॉज वो बहुत आर्किटेक्ट्स आते हैं, दे वांट टू गो फॉर फर्दर स्पेशलाइजेशन टू जर्मनी. सो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी. Fine arts, they are specialized fine arts academies which have the status of a university, but they are academies. Music academies, उसमें far east से तो भरे हुए हैं लोग, because आपको अगर पता हो तो जर्मनी में म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक बहुत पसंद किया जाता है और बहुत बहुत मशहूर कंपोजर्स वहां से आए हुए हैं. So the music academies are full of Japanese and Korean and Chinese students, because वहाँ बहुत इसको अहमियत दी जाती है, and it's really fantastic. तो यहाँ भी हैं. So whether you're a science student or an art student, there's really something for everyone, and these international degree programs are offered in every field. It's not only in engineering or the technical fields, but also in STEM, for example, microbiology, biology, chemistry. Pharma industry in Germany is huge. So ये भी एक opportunity है if you're a pharmacist, or if you're microbiologist, or इस तरह की चीजें भी बहुत ऑफर है. जर्मनी में इन्वेंट इतनी चीजें हुई हैं. एक्सरे वहाँ इन्वेंट हुआ है, पेनिसिलिन वहाँ इन्वेंट हुआ है, एस्पिरिन वहाँ इन्वेंट हुआ है. So in fields में भी opportunities हैं. Fantastic. Thank you for sharing. Naurin, again, going back to one final question, second last question, and then we'll ask a little bit your parting views for our students. ये बताइए कि आपने you've seen the German system of education over there, primary school भी, आपने यहाँ का भी primary school and high school अब flavor ले चुके हैं. What parallels can you draw, and what seems to be things which stand out between the two education systems, between Pakistan and Germany, whether similarities or, let's say, differences? And do you feel our students would be able to adjust well into the academic environment? उनका structure किस तरह से होता है? थोड़ा सा अगर quick comparison, एक flavor हमें बता दीजिए, please. Well, I went to school in Germany, and it was a fantastic experience. The most important thing, I think, जिस पे emphasis होती है Germany में, is learning by doing. So it is not only किताबी knowledge नहीं खाली होती है, but and बहुत ज़्यादा student centered होते हैं उनकी classes. तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि kindergarten, which is also a German word, by the way. Kinder means children, garten means garden. So this is the garden where जिधर आप बच्चों को उगाते हैं. तो वो that वहाँ से शुरू होते हैं. बड़े independent बच्चे होते हैं, और लर्निंग बहुत डीप होती है. बट जब मैं यहाँ आई, आई वाज 16 years old, and I was very scared because एक तो English was my first language. तो मगर I adjusted really well, because यहाँ भी हम लोग अपने सिस्टम को बहुत कम क्रेडिट देते हैं. मैं देखती हूँ जब ऐसे भी यहाँ से जो स्टूडेंट्स जाते हैं, जर्मनी में जाते हैं, they do very very well. My own children have studied abroad, और वो भी यहाँ से ही पढ़े हुए हैं. उन्होंने O level A level यहाँ से किया.
बहुत अच्छा उन्होंने एडजस्ट भी वहाँ किया और बहुत अच्छी उनकी डिग्रीज भी आई हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनके आए हैं। तो आई फील हमें किसी चीज से घबराना नहीं चाहिए, वी आर नॉट लेस देन एनीवन। इट्स रियली इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट हिम और हरसेल्फ। अगर आप दिलचस्पी लेते हो, अगर आप खाली रटे नहीं लगाते हो, अगर आप इंटरेस्ट लेते हो अपनी पढ़ाई में, तो आई थिंक एज आई सेड बिफोर, द स्काई इज द लिमिट। तो आप वहां इतने ही सक्सेसफुल होंगे जितने वहां के बच्चे। Very kind. Thank you for sharing. And the last question, Naurin, how could we let you go without asking that question? आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस सेशन में, बाद में भी सुनेंगे स्टूडेंट्स जो करंटली हमारे पास पढ़ रहे हैं, कुछ हमारे अलमनाई एंड मोर इम्पोर्टेंटली प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हु मे लिसन टू दिस रिकॉर्डिंग एट अ लेटर स्टेज। उनके लिए, यंग जनरेशन के लिए, यंग पॉड के लिए, entering their either entering their academic career or in some cases transitioning from their academic career to their professional career, what message would you give to them? अभी भी तो मैंने यही बोला, दैट वाज माय मैसेज। आई थिंक लैंग्वेज, एक तरफ से तो एक लैंग्वेज के हवाले से आपकी आंखें खुलती हैं, बिकॉज आप लैंग्वेज नहीं खाली सीखते हैं, आप एक नया कल्चर सीखते हैं, और आपकी एक तब जो वर्ड व्यू होती है वो खुल जाती है आपकी। यू लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स। दिस इज व्हाई एवरीबडी लाइक्स टू ट्रैवल। आई थिंक कि आप नई चीजें सीखें, आप नए फ्लेवर्स, you smell them, you eat them, you feel them, and that really enriches our lives, because at the end of the day I think अगर आपने अपने बच्चों के लिए या अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ अच्छा करना है, तो उनको कहेंगे जाओ और ट्रैवल करो और दुनिया देखो। बिकॉज बाद में जब हम काम करने शुरू हो जाते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं होता, और फिर फैमिलीज हो जाती हैं। तो ये आपका वक्त है, आप हुंजा जाएं, आप कराची जाएं, आप बड़े होटल्स में ना रहें, आप अपना रक्सैक लें जिस तरह सारी दुनिया के बच्चे करते हैं, एंड ट्रैवल द वर्ल्ड and follow your dreams. That is my only thing. Don't listen to anybody who will tell you कि नहीं जी आपने तो डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना। Follow your dream. If you want to be a hairdresser, you can be a great hairdresser. If you want to be a designer, don't listen to anyone. Follow your heart, because that will make you happy for the rest of your life. So I feel very strongly about that. Fantastic and well said. बिल्कुल. I think अगर आप passionate नहीं है about what you're likely going to be doing for the rest of your life, you probably won't be good at it. Or I think again, drawing reference to my age, मेरे ज़माने में I think बहुत ज़्यादा एक silos में बंद कर दिया जाता था. अल्हम्दुलिल्लाह I had great opportunity parents के लिहाज से, personally, professionally. लेकिन आजकल के बच्चों के पास जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, आई डोंट थिंक हमारे टाइम में वो अवेलेबल थी। और लिटरली द वर्ल्ड इज योर ओयस्टर। आप यू कैन ट्रांसेंड बाउंड्रीज ऑफ जियोग्राफी, ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि ये जो आप और मैं हम बैठे बात कर रहे हैं फेस टू फेस ऑन जूम is in itself a huge technology which has become so much more acceptable। और पाकिस्तान खैर पहले भी काफी आगे था इस फील्ड में, बट कोविड के बाद ये एक प्लेइंग फील्ड जिसको कहते हैं लेवलाइज हो चुकी है। सो आई वुड डेफिनेटली एनकरेज दोस ऑफ यू लिसनिंग टुडे एंड हु विल लिसन बाद में भी, कि जो नौरीन कह रही हैं आपके पास अपॉर्चुनिटी है, डोंट फील यू डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी। विल पावर चाहिए होती है, आप गिरेंगे, आप लड़खड़ाएंगे, बट पिक योरसेल्फ ऑफ, डस्ट योरसेल्फ ऑफ एंड गो एट इट अगेन। जिंदगी बहुत छोटी होती है, डोंट डू थिंग्स व्हिच यू डोंट एंजॉय। ठीक है, जेब में पैसा भी होना चाहिए, पैसे बनने भी चाहिए, but pursue your passion. If you can align your passion and your career, nothing better than it. You'll be the happiest person ever. With that, Naurin, I'd like to take the opportunity to thank you. आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ ये टाइम स्पेंड किया। आप कैंपस आइए हमारे, we look forward to welcoming you back on campus. And of course, again मैं अपने स्टूडेंट से कहूँगा NIU से कि जी जरूर Annemarie-Schimmel Center विजिट कीजिए, see for yourself what it is all about. It's exposure is everything today. It is a global world. आप बैठे बैठे हम सब exposure ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा immersive जो environment है which you can have around you through the center, I would definitely encourage कि लोग वहाँ जाएं, देखें, explore a few opportunities. If you don't like what you see, you can always decide then. But thank you again, Naurin, and Thank you. Thank you, Ji. Thank you so much, and inshallah we'll meet again. Inshallah. Thank you. Assalamu alaikum.